सो তাহলে আজ আমি কোনার্ক টেম্পল দেখিব। তো কোনার্ক টেম্পল যদি তুমি দেখিব ফার্স্ট আর ইন্ট্রো কেমিতে লেখিব বুঝিপারছ। তো ইন্ট্রোটা যদি তোমাকে কুহাଯାଏ କି ইন্ট্রো লেখো কোনার্ক টেম্পল, তো কোন হব ইন্ট্রো? যদি কোনার্কକୁ কোন কুହାଯାଏ আর্কা ক্ষেত্র, বুঝিপারছ না? কোন কুହାଯାଏ আর্কা ক্ষেত্র। সো কোনার্ক যাকে আমি কিছু কোনার্ক, বুঝিপারছ? তো কোনার্ক আর অর্থাৎ এই আর্ক অর্থ হচ্ছে সন, বুঝিপারছ? তো দ্যাট মিন্স আমি যদি দেখিবা তো ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ତ आपको কোন କୁହାଯାଏ কি ক্ষেত্র কুହାଯାଏ আর্কা ক্ষেত্র নিচে কুହାଯାଏ, বুঝিপারছ? which is dedicated to the sun. So that means Konark was the marvel of Odisha temple architecture, the marvel of Odisha temple architecture, and the zenith of Odisha temple architecture. This is also called as the zenith. The किसी keyword जो डम को होची हम डम को देते हैं, I will dictate the introduction में जाऊँगी पहले. So this is the marvel and zenith of temple architecture of Odisha, or that is the Utkal style of temple architecture. The Utkal style of temple architecture that is zenith में कहवा with the climate. So that is reflect here, that is in form of हमें कहवा Konark reflects. So that is reflected here. तो आप हमें देखिए very well. ये temple is 13th century temple, and this image is from the back side. This image taken from the back side of the temple, not from the front side. So here you can see this back side is जोटा तुम damage part तुम देखि परिबो. Here is the some this damage part. Damage part को कौन कहितली? सेटा होची तार शिखर मेन मंदिर है ना. This is the damage part of the temple. है ना. ये होची temple रो damage part जोटा थिला मेन शिखर ऑफ द टेम्पल, द मेन टेम्पल जहाँ को हम कोन ओडिसा रे देउल बुझो. सो हियर वाज द विमान. तो ये थिला कोन तमरो विमान, और जहाँ को हम कहउछ देउल, और जहाँ को हम कोन कहबा शिखर. तो ये थिला जोटा कि डैमेज ही जाई छी, बुझिबो छ. नाउ जोटा तुम देखुछ दैट इज द जगमोहन मेन टेम्पल थिला, दैट इज डिलैपिडेटेड. अच्छा जो माने ऑनलाइन रो 6 टेबल होछ ना, वॉइस ठीक ठाक Yes, sir. है ना. तो ये देखो दैट मींस आपको तमे एटा को मन रखिबो द मेन स्ट्रक्चर इज फिनिश्ड ना, द जगमोहन इज स्टैंडिंग, बुझिबो. एंड दिस टेंपल इज विच स्टाइल आपको कोन कहा जे तमरो पीढ़ा स्टाइल. इट वुड बी व्हाट पीढ़ा स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर. दैट मींस ओडिशा टेंपल आर्किटेक्चर को हम तीन भाग में भाग करते हैं. फास्ट हमें पढ़ते कोन फास्ट थिला तमरो यदि हमें नागरा स्टाइल. सो फास्ट थिला तमरो कोन नागरा स्टाइल, बुझिबो. तो नागरा स्टाइल रो सब डिवीजन होची कि ना उत्कल स्टाइल को हम पुनी तीन भाग रेखा पीढ़ा एंड खाकरा. तो दिस वन इज कमिंग अंडर व्हाट पीढ़ा स्टाइल. पीढ़ा रो मीनिंग कोन पीढ़ा को स्टेयर, दैट वुड बी स्टेयर और द स्टेप सेट, बुझिबो. आपको मैं देखितले और दीज आर द स्लैब्स, और यू मे कॉल दीज आर द स्लैब्स. एगुडा होची तमरो स्लैब्स, बुझिबो. The slabs are putting together to form the pidha. A group of slabs are there. ये तुम इसको देखो तो these are group of slabs, बुझिबो. And each groups they are अब कौन बाजे पोटोल. तो कहते हैं ये जो तुम्हारे ग्रुप्स को कौन बाजे पोटोल, like this one. ये गोटे group of slab. This one is a group of slab. This one is a group of slab, बुझिबो. So this group of slabs are called as पोटोल, बुझिबो. हम इनको कौन बाजे पोटोल, the group of slabs. The 13th century temple यदि हम देखिबा. सो पोटोलटा यदि हम यूनिक আর जो पोटोलटा यूनिक पोटोल और सब इंपोर्टेंट होची कोन ये जो तमरा इवोल्यूशन यदि तुमको देखो गोटेला टेंपल आर्किटेक्चर इवोल्यूशन, गोटेला इवोल्यूशन ऑफ जगमोहन डीटा, बुझिबो. इवोल्यूशन ऑफ पूरा होल टेंपल और होची इवोल्यूशन ऑफ ओनली पार्ट्स ऑफ जगमोहन. एंड दिस वन आर स्टार्टिंग कोठी हेतला को टेंपल हेतला जगमोहन. First, it was introduced by Parshurameshwar. So that means since the Parshurameshwar temple, the 7th century temple, now we are in 13th century. That means 1255 AD. 1255, almost mid of the 13th century. Mid of 13th century, we are looking to one of the most beautiful temple in the world and the most encarved temple as well. बहुत सारा कारुकाज है. शायद दुनिया रे एमती कौन से टेंपल नहीं वेयर कोनार्क लाइक हमें कहबा एनकार्व्ड पेज एमती कौन से नहीं.
So this is the most encarved temple, Konark temple, which was, and also a UNESCO heritage site, the only UNESCO heritage site of Odisha. तो पूरा যদি আমি पूरा আমি দেখিবা ওড়িশার only heritage site, বুঝিপারছ, only heritage site হচ্ছে তোমার কোনার্ক। তো এটা এটাকে তুমি মনে রাখো, তো UNESCO heritage site। Now that means যদি তুমি কহিব UNESCO heritage site, now that signifies the beauty and its importance, and that is what আমি তো ইউনেস্কো থাকে, ইউনেস্কো কোন করে না প্রিজার্ভেশন করে, বুঝিপারছ। তো ইউনেস্কো সাইট যেহেতু এটা ইউনেস্কো সাইট, দ্যাট মিন্স আরো সিগনিফিকেন্স সেটু জনা। सन टेम्पल प्रथम कथा न्यूट्रल, कौन से रिलीजन सहित किसी एसोसिएशन नहीं, एंड इट्स ए व्हाट यूनेस्को हेरिटेज साइट सिचुएटेड ऑन द को बैंक थिला को रिवर चंद्रभागा, इट वाज चंद्रभागा। तो द रिवर इज अ डेड वन, विजुअल द रिवर इज अ डेड वन। तो एबे जे देखबा इज अ डेड रिवर on the shore of Bay of Bengal and on the bank of river Chandrabhaga. Now that the Tamiko was 130 kilometers दूर को पड़ेगा and समुद्र, that time used to be on the shore, बुझिबछन। ये एबे समुद्र तरफ पछुक पड़ेला ठीक जाबियो, that means ये हमें कहबा। तो रिसेंटली जेतले हम देखबा ये जो G20 थिला तमरो G20 समिट इन न्यू दिल्ली, ये जो कोनार्क व्हील तुम देखि परछो, ये कोनार्क व्हील वाज रिप्रेजेंटेड देयर, बुझिबछन। In front of which the world leaders they were taking their selfies and আমি কবা जो फोटोज वगैरह नथिला। तो एटा से मंडप जो महामंडप काना आतला कोन महामंडप, that was decorated with a beautiful Konark wheel, बुझिबछन। तो ये न्यूज को हमें कोन करबा आंसर राइटिंग रे यूज करबा, बुझिबछन। ये जो न्यूज थिला आपको आंसर राइटिंग रे यूज करबा केमिति तुमको सपोज कोनार्क पर टेंपल न्यूज আছে। तो लेट्स से एग्जांपल as like this, so देखो Konark news recently it was in news the temple because the G20 summit where the Konark feature wheel was featured, which was in the Mahamandapa where the guests were received, that shows its significance because ये world को देखा जाउछि एका को एथिबे ताको सेठी रखा जाइतला तो के world leader will have to do so that world को world रो इंपोर्टेंस देखा पड़िबो, स्टेट इंपोर्टेंस एगुडा से माने देखिबे। तो वर्ल्ड रो सिग्निफिकेंस कोन, ये वर्ल्ड पे सिग्निफिकेंस सेथिबे आको सेठी रिप्रेजेंट करा हेतला, बुझबछन। आरो एसेंस कोन कारण आरो वर्ल्ड वाइड सिग्निफिकेंस अछि सेथिबे ताको सेठी पुट करा जाइतला, दैट शोज इट्स इंपोर्टेंस, बुझबछन। ते एथिबे ताको पुट करा हेतला एई भले ताको लेखा। देन आप तो बाकी त हम तार फीचर को जिबा। दिस टेंपल इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, part of যদি আমি কইবা তো এটি তুমি দেখি পারো the spectators they are watching and this is the back side, here is the back side of the temple, from here would be the front side, এপটু front side রহিব। যাবিও ASI তো আকু কি করুছি ASI archaeological survey of India conserving the temple, the guardian of this temple, যদি তোমাকে পাজে who is the guardian of this temple, the guardian of this temple is ASI, the archaeological survey of India is the guardian of this temple, okay, guardian of this temple who is taking all the measures to protect and conserve the temple. Like here you can see the steel frames is been attached which was for the protection of the temple, steel frames लगे कि ताको protect करा होछि। How come knights are also part of tono, that is the diamond triangle, it's a part of diamond golden triangle के पूरी कोनार्क लिंक करा, it's a part of golden triangle, বুঝছো এই রবে তোমরা কোন ভুবনেশ্বর কোনার্ক পুরী, এই যে তোমার হবে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল, হিয়ার would be পুরী কোনার্ক and ভুবনেশ্বর কইলে লিঙ্গরাজ। ଆଉ ডায়মন্ড ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে তোমার কোটা রত্নগিরি উদয়গিরি ললিতগিরি, ଯୋଉଠି ତମର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ମନୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ଆମର ଯାଜପୁରରେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ସେଟା ହେଲା ତମର ଗୋଲ୍ଡେନ ସରି ଡାयମଣ୍ଡ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଗୋଲ୍ଡେନ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। সেটা ଯୋଉଠି ଲଳିତଗିରି ଉଦୟଗିରି ରତ୍ନଗିରି ଶୁଣିଥିବ ଯାଇଥିବ, ତ ସେଟା ହେଲା ତମର ଡାୟମଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ। ନା ଦିସ୍ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ ଆଉ କଣ ଅଛି କିଛି ଆगे ଖାଲି इंट्रोडक्शन ମୁଁ ଦଉଛି, ୟା ପରେ ତାପରେ इंट्रोडक्शन ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରିବି, ଦେନ୍ ଆମେ ଫିଚର କୁ ଯିବା। Then this temple is situated 30 km north to Puri, 30 km north to Puri, this temple is situated 30 km north to Puri, बुझिबछन। पुरी तो देवपुर मेरन ड्राइव है, ये रहो तारा इंट्रोडक्शन। ସେଟା କଣ ଇଏ କର ललितगिरी उदयगिरी ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ରତ୍ନଗିରି, ଧଉଳି ତ ଏଇଠି, ଇଏ ତ ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର, ଯାଜପୁର ରତ୍ନଗିରି ସେଇଟା ବୁଝିବ। ଉଦୟଗିରି ରତ୍ନଗିରି
ଉଦୟଗିରି ଲଳିତଗିରି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟେମ୍ପଲ୍ସ ର इंट्रोडक्शन टिके लिखि देता। इंट्रोडक्शन तमे आपन टेम्पल फीचर आगे इंट्रोडक्शन लिखि दियो। Only UNESCO heritage site introduction Konark. The only UNESCO heritage site of Odisha. The only UNESCO heritage site of Odisha. The Konark Sun Temple. Konark Sun Temple. Which is situated 30 kilometers north of Puri. 30 kilometers north of Puri. Is a part of or it constituent or is a part of Golden Triangle. 30 kilometers north of Puri and it's a part of Golden Triangle. The other two are Puri and Lingaraj. The other two are Puri and Lingaraj. Sun Temple or called as Arga Khetra or called as Arga Khetra. Which was built in 13th century. By Langula Narasimhadeva of Ganges dynasty. By Langula Narasimhadeva. By King Langula Narasimhadeva, the king of Ganges dynasty of Odisha, the king of Ganga, the Ganges dynasty of Odisha. कारण दीटा कांग्रेस डायनेस्टी थिला गोटे कर्नाटक रे गोटे ओडिसा रे सेथि ताकू पर्टिकुलर क्वेश्चन सर को डायनेस्टी कहले टिके Ganges बा गंगा बुझि परछन द Ganges dynasty of Odisha which took 12 years where 1200 crafty craftsmen were engaged. It's took 12 years where 1200 crafty craftsmen were engaged. Now, crafty, skilled or skilled. Craftsmen, crafty or skilled. CRAFT. Crafty or skilled work. That means like work. Workers, they were engaged. सर क्राफ्ट कौन कहते हैं? Crafty craftsmen were engaged. Men were engaged. And finally, Yishu Maharana, the little boy. Oh, sorry. Sorry. Dharmapata, the little boy of chief architecture. Vishnu Maharana of chief architecture of Vishnu Maharana, who crowned the temple. The temple was in news during the G20 summit in New Delhi. It is starting to look at Said the temple
এটা মিস করে দিয়েছি স্টার্টিং অফ দ্য টেম্পল ওয়াজ news during the G20 summit in Delhi. Sir, The temple was in news during the G20 summit in New Delhi, where the wheel of temple was featured. Where the wheel of temple was featured in the mandapa of G20 summit, in the Mahamandapa actually. महामंडप ऑफ G20 समिट एंड सेठी बहुत सारा लीडर आसीबे ना सेठी ताको महामंडप कहै हला in the Mahamandap of G20 summit where the guests were received or the dignitaries where the dignitaries were received and showcased where the dignitaries were received and showcased where the dignitaries were received and showcased. And showcased. That signifies the essence, the essence, that signifies the essence, elegancy, and uniqueness of Konark field. এটা को फास्ट लिखिया थिला तापर तुम इंट्रोडक्शन बुझ परछ ना এটা ওকে ফাস্ট লিখ হলা এটা को फास्ट লিখিবো जो तुम इंट्रोडक्शन स्टार्ट होइतलो ता पूर्व ওইটা লিখিবো তারপর সেটা লিখ হলা এটা কে মিস্টেক হই দিছি মোর বুঝ परछ তো এইভাবে इंट्रोडक्शन তোমাকে লেখিয়া পড়িবে it should be little bit artistic but you should not like what should not move away from the core area of the person. Always you should stick to the core area. বুঝ পারছ তো সেটা আপনি তো আনসার রাইটিং রে কহাবো কি হাউ টু স্টিক টু দ্য কোর এরিয়াস বেটার হইব তো এবে ইন্ট্রোডাকশন বুঝি গেল না আমি আসলে কোনো ফিচার্স বাট তা পূর্ব ইদার দে মে আস্ক ইউ কি only discuss the wheel of the Konark temple मतलब साधारणतः हमारा कौनसा टेंडेंसी कि they will ask the Konark temple but it might be a thunder from the wheel they might ask you the wheel only. Okay, let's say 10 marks okay, they will ask only B. कौन करिए? Konark temple. So that means you have to compute that calculation development. So exactly the calculation of the wheel, and that's the beauty of this temple. So second temple की जेतेबेले तुम भाबो एते बड़ टेंपल अछि तमे टेंपल खाली तो पूरा टेंपल टाको से मंडप रे देखि पारथुंटे we could have shown the world leader the temples one. But instead of the temple, only the wheels were featured there. Which was wheels was featured. So why the wheel was featured? That means that wheels is having significance in the note 10 rupees note with the video. So that wheels also there. So it is the main introduction the likhi sir, outside Pugona. नहीं सेटा होची तमरो कर्नाटक बुझिबो जा बाजे no आईओल टेंपल जो व्हील कहते हैं ना आईओल टेंपल बट कोणार्क रो आगु होते तो सेटा रोटेट हेगिता बुझिबो तो ये तमरो इंट्रो रहिबो बुझिबो तो टिके एमिति भाबो जति if you can improve all intro like this what will happen you would be topper no doubt more the doubt level but what we do is we miss the intro which is very significant part of the question. Let it be 2 lines, that doesn't matter. The matter is that how much you are putting there, how much you are convincing the examiner, yes, you know the things. Which one? That will show your beauty. So that's the only, unless and until you are not writing, na? So the only jette bhalo hitao, jette bhalo padhitao, ke jana padibo. Unless it is not reflecting on the note. The note reflect, unless na jana padibo, to jani thile kon habo? तो सेठी तो मुह देखुनी ना एटा लिखिछि से एटा श्रावण लिखिछि देनी क्लास से मार्क दे दोटी अधिक बुझ परछन तो that would not be there because examiner so whoever would be there
yes, she is not aware of the candidate, even na bhi jana nahi, roll number bhi jana nahi, only there will be barcode. बुझियो, so biasness is not there. देखो, तो ये थी तुम्हारा intro. Now I हेडिंग देके तापर एलाबोरेट करिबु ना अच्छा तापर मेन स्ट्रक्चर को सब मेन पार्ट को सब टेम्पल एटा तो कोई कोन intro एथिबे डाके because I know the hurdle comes from there. But breaking the ice cell, once again, breaking the cell is always difficult. তারপরে ফিচার্স গুলো কেন হেডিং হবে যদি তো অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ একটু করে দেখো तापर केमते लिखे तुमको तापर केमते लिखबा का intro में तापर तो बॉडी पार्ट पॉसिबल পড়ে तो लिखे एतरे तो लिखियो the temple is having बुझियो as it's a part of Kalinga style of temple architecture, the temple is having the following structure, important structure एमते लिखे बुझियो सो कम्युनिकेट हेगला देन कम्स स्ट्रक्चर 1 the main temple को लिखिलो तापर विमान को लिखिलो एबी बुझियो तो following जो तुमरो कोन स्ट्रक्चर को फीचर तो गोटे फीचर्स लिखिलो तापर कंक्लूजन लिखिबो तुम कहीं तब के बॉडी पार्ट हेडलाइन लिखुचो दिस इज बॉडी पार्ट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ओनली यू शुड हैव ए फ्लो इन आंसर बुझियो तुम यू शुड नॉट हैव एनी पॉज रहिबा दरकार नहीं हम दीटा पैराग्राफ भितरे इंटरलिंक रहिबा दरकार बुझियो तुम तो फॉलोइंग्स आर द अदरवाइज आउ जणी के कैंडिडेट लिखुची फॉलोइंग्स आर द यूनिक फीचर्स ऑफ द टेंपल आर्किटेक्चर ऑफ द कोनार्क सेमती भी परिबो किछ असुविधा नहीं नाले डायरेक्ट तुम लिखुचो फीचर्स ऑफ द टेंपल आर्किटेक्चर एबे सपोज इंट्रो लिखि देला तापर हेडलाइन देउछ फीचर ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर तो जे हेडलाइन है आ भीतर कम्युनिकेशन रहला ना बुझि परछन सेतबे तुम लिखो फॉलोइंग्स आर द यूनिक फीचर्स तो तापर गोटे फीचर को डिस्कस करियो बुझि परछन तो सब बेले पारा को पारा कनेक्ट होवा दरकार जाको मो हुए इंटरलिंकिंग और द ट्रांजिशन जोन इन द आंसर तो ये जो ट्रांजिशन जोन ता मिस कर दे कैंडिडेट बुझि परछन तो तुमको सही टाइम में फास्ट होइबो माइंड so that will you need to have the practice ample practice तो practice इतना करो से transition zone रो जे gap ही जे आंसर है से flow टा maintain ही जो बुझियो सन आगे मैं आपको पूछूंगा ये wheel है ना ये देखो तो हमें wheel the beautiful Konark wheel बुझियो सन now this wheel so how many wheels are there 24 wheels तो बुझियो सन तो हमें खास एक बॉडी पार्ट मु तुमको डाकू लिया बुझियो सन the body part is up to you इंट्रोटा मोर थाए नाम तमरो रेस्ट ऑफ द पार्ट इज यूज बुझियो ना बाकी मु पढाई देछ सेटा तमे लिखियो कना इट्स नॉट पॉसिबल टू डिक्टेट ऑल द आंसर बुझियो सो दैट मु तुमको जो डिफिकल्ट हबो हां बट यू आर आल्सो मोस्ट वेलकम इफ यू आर नॉट मतलब ट्राइड बट यू डिडंट बुझियो तो जदि न हैला देन आई एम देयर बुझियो तो ये भी हम देखिए व्हील को बुझिबा ये व्हील बहुत इंपोर्टेंट तो व्हील को बुझिबा कैन व्हील तुमको डायरेक्ट गोटे क्वेश्चन खाली व्हील हे पाए के व्हील ऑफ द कोनार्क टेंपल को डिस्कस फर्स्ट ऑफ ये होची ये जो व्हील तुमको जदी कहछो यूज ऑफ व्हील इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम ओडिशा ट्रू और फॉल्स तुमको देख कहछो द यूज ऑफ व्हील द व्हील कंस्ट्रक्शन फर्स्ट इवॉल्वड इन ओडिशा नो इट वाज आल्सो देयर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इट वाज आल्सो देयर in form of the cart that toy cart was there that was also having wheels small wheels so wheels tradition is not it's what confined to Odisha it was earlier there in Indus Valley civilization wheel ro jeti hame khali wheel kotha ti discuss kariba so evolution of the wheels is not I would say confined to the Odisha and that is Odisha is not the origin place but somehow this wheel is unique wheel ro tradition jo hame kha use of wheel that was back to the Indus Valley civilization माना ना ये व्हील के एबे व्हील रो बुझ पालो कने एमटी क्वेश्चन में तुम आसे पारे केते बोले तो नाउ कम्स टू दिस व्हील ना हाउ मेनी व्हील्स आर देयर 24 व्हील्स बुझियो सन कोनार्क टेंपल में केतेटा व्हील्स अछि 24 व्हील्स 12 सेट्स दैट मींस 12 सेट 24 व्हील्स तो 12 सेट्स इक्वल टू 12 into 2 तो 24 व्हील्स आर देयर बुझियो सन एटा मन रखिबो 24 व्हील्स अछि ना सबुठ इंपोर्टेंट कथा कोन टेंशन नहीं 24 व्हील्स रो कैलकुलेशन में जाने अब कोठी अच्छी भी तमे जाने
बुझिपाରୁछ अच्छा ये जो टेम्पल इज अ चैरियट शेप ये जो तुमर टेम्पल टा अछि ये को शेप चैरियट शेप पर रथ चैरियट और रथ शेप रो टेम्पल रो तेटा बुझिपारुछ दैट इज द रथ बा जाको हम कहूचे चैरियट now this chariot is having 12 pairs or 24 wheels 24 giant wheels are there 12 pairs or 24 wheels are there now ये 24 केमिति arranged ହେଇଛି ये जो 24 wheels so temple is having three structure for example a traditional temple architecture of Odisha यदि अच्छी मैं देखिए नहीं छाड़ अच्छा जो मैंने ऑनलाइन रे बुझा पड़ुची तुमको यस सर अच्छा ये देखो ना गोटे ट्रेडिशनल टेम्पल आर्किटेक्चर ओडिसा रे केमथि जो ओडिसा रे माने ट्रेडिशनल इन द नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर दैट विल हैव शिखर it will have जगमोहन it will have other बाकी फीचर जैसे तुम्हारा भोग मंडप और नाटक ये सब आते जी तो दैट इज द ट्रेडिशनल फीचर ऑफ द टेम्पल ऑफ उत्कल स्टाइल और द कलिंग स्टाइल बुझियो now what happens here let's say एठी तमरो तीनटा अछि फॉर एग्जांपल एठी हम बट कोनार्क रे हमको कोन करा छिबो 24 व्हील्स केमथि अरेंज हिची तुम देखो जोडा तमरो मेन टेंपल थिला लाइक दिस वन ये जो स्टार्टिंग रे ये देखो तमरो एठी मु तुमको कहि दउची हियर मु जे लेखुची देखो ये जो तमरो एटा हला कोन मेन टेंपल जोटा हम का जाको कोचे विमान ये डिलापिडेटेड ही जाइची खत्म ही जाइची बट आर ईच साइड रे 6 and 6 कले मतलब दीपट साइड रे छोटा व्हील अछि बुझिवछन तले केतेटा हैला 12टा बुझिवछन तो हिला तमरा 12 सो देन तापर आसीबो तमरो ए जो मेन एटा हैला वर्तमान कोन भी मानो यार 4 केते हैला 12 8 20 विमान पूरा पूरा हां पूरा ऊपर नुह तले बा रथ चक्का कोठी रहइबो तले रहइबो हम लेखिबी कोठी कोठी लेखिबी मतलब जब तक से एबे देखु जे तमे व्हील एठी अछि दीज आर द व्हील्स बुझि परछन तो दैट मींस जो मेन टेंपल तार दीपट साइड रे छोटा 12टा देन जो वर्तमान जो तमरो छी कोन जगह तार दीपट साइड रे 4 to 8 तो टोटल हैला 20 फ्रंट रहला 2 to 4 20 ना भी बुझ बोलन कैलकुलेशन 6 4 2 बुझ बसन तो प्रथम जो मेन टेंपल तार दीपट साइड रे छोटा 12 6 बुझ बसन देन इट वुड बी 4 4 8 on the side of jagam then for जो front रहिबो that is the there are 2 to 4 like here you can see एटा तो फ्रंट टेंपल रो एठी एंट्री करछो एठी मतलब पूरा टेंपल टा तो नहीं एठी देखिए परली बुझल एठी 2 2 रहइबो एठी तमे देखुछो द लाइन ओवर द एलिफेंट तळे की अछि गोटे मनीष बुझिबो माने मनीष ऊपर एलिफेंट ऊपर लायन तार व्हाट दैट सिग्निफिकेशन छ के मनीष दीटा कारण जबो डेवास्टेटेड है गोटे हला धन गोटे हला अहंकार लायन सिंबलाइज प्राइड बुझिबो और एलिफेंट हला वेल्थ तो मनीष दीटा कारण जबो एटी देखो द मैन एलिफेंट लायन बुझि परछन आरो सिग्निफिकेंस अछि बुझि परछन मनीष ए दीटा कारण बुझि परछन देन गोटेला वेल्थ एलिफेंट सिंबलाइज द वेल्थ एंड द लायन बुझि परछन बट एठी के हम परे जिबा आगे हम पढि दे तुमको व्हील तो व्हील एबे बुझि परिबो फास्ट होबा तमर जो मेन टेंपल विमान सॉरी हां विमान दीपट साइड रे कले तम सदन और नॉर्दर्न बुझि परछन ये पटे दीपट साइड के तरह 6 6 12 पेयर देन एज को तुम की जगमोहन 4 4 8 तापर सो फ्रंटल पार्ट पूरा फ्रंटल पर 2 2 4 सो 12 दैट मींस हम सेव हे गेला 24 व्हील्स एबे 24 व्हील्स का कैलकुलेशन किछि पहिले एबे 20 व्हील देखिबा ना दैट 24 व्हील्स सिग्निफाइज ना एबे तमे कहबे जो 24 व्हील्स को 24 व्हील्स कौन सिग्निफाइज करे गोटे दिन रो 24 घंटा बुझि परछ so that means a 24 hours को significant signifies 24 hours that 24 wheels equal to 24 hours बुझि परछ ना they were or they are मुत कविन were driven by 7 horses तेन करके 24 into 7 the chariot is being driven by the horses
7 হর্সেস ଅଛି 7টা ঘোড়া 24টা হুইল বুঝিপারছেন তো তাহলে 12 into 20 12 into 7 বুঝিপারছেন বা 7 into 12 ध्यान में অলওয়েজ দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট তো ইয়ে হচ্ছে ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ତମର ରହିଲା ତ ଆକୁ ତମେ 12 into 7 ଆକୁ ଯଦି କହିପାରିବ 12 into 7 ବି କହିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ 12 into 7 ତ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଡିଫାଇନ୍ କର ବୁଝିପାରିଲ ସାତଟା ଘୋଡ଼ା ଅଛି 12 wheels and sorry 24 wheels and 12 pairs so always the horses are driving বুঝিପାରିଲ ତ 24 hours is being driven ବୁଝିପାରିଲ ତ କିଏ ଚାରିଆଡେ ଡ୍ରାଇଭ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଲାଇଫ ଚାରିଅଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ this is why this is also called as the one of the lived chariot or the living chariot ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଠି horses ଅଛି 7 horses ମୁଁ କଣ ପଢିବି 7 horses କଣ ତାଙ୍କର ନାଁ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କହିବି ବାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ wheel ର ସବୁ wheel ର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଅଛି that is not required ବାସ୍ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ wheel କୁ ପଢିବା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି 24 wheel aligned ହେଇଛି and how they are driven by the 7 horses. Now the wheel को देखो 8 spokes are there 1 2 3 4 5 6 7 and 8 8 spokes ये रहला तमरो one wheel is having 8 spokes गोटे wheel रे 8टा spokes ଅଛି बुझिबो तो 8 spokes ये बे सुनो ये 8 spokes represent what 8 spokes 8 पहर कौन पहर कहते नहीं दी पहर तीन पहर गाँ सब कहते बुझे so 1 प्रहर equal to 3 hours 1 प्रहर equal to 3 hours तो ये जो गोटिए व्हील रो आउ गोटे जो स्पोक सॉरी गोटे स्पोक रो आउ गोटे स्पोक्स रो होची तमरो 1 प्रहर बुझि परछ equal to 3 hours तो तले ये जो तमरो गोटे स्पोक्स लेट्स से दिस वन स्पोक 1 एंड स्पोक्स 2 ये भीतर जो डिफरेंस होची तमरो 3 hours रो तो आपको गोटे प्रहर बोली कहछ बुझिपारछन तले हे जीवो तुम 8 থেকে 24 घंटा ना बुझिपारन दैट मींस एला गोटे सन डायल तो दिस रिप्रेजेंट ए सन डायल बुझिपारछन गोटे प्रहर बुझिगल तले एला गोटे सन डायल ना बुझा पड़लान काकू जो मैंने ऑनलाइन रे बुझा पड़ुची तो दैट मींस ये गोटे प्रहर 1 एंड 2 तो या भीतर 3 आवर्स डिफरेंस रहिबो बुझिपारछन तो एटा रहला गोटे प्रहर तो हे गेला तुम 24 घंटा 24 आवर्स कंप्लीट है गेल ना आउट देखो ये रहला तमरो 24 ना आपको कोन कहजे सन डायल आपको कोन कहजे सन डायल बुझि परछन ए जो व्हील को कोन कहजे सन डायल ना कोन कहला रिपीट करके मु कहली each wheel is having 8 spokes 8 major spokes the difference between two major spokes is 3 hours is 3 hours equal to 1 prahara so equal to it would be तुम्हारा कौन है जो 24 घंटा 8 3 24 बुझी पड़छ ओके सन डायल DIL सन डायल माने जो घंटा सूर्य घड़ी spokes सर प्रहर जो पहले कैलकुलेशन माने 12 ରୁ 3ଟା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟା कोला तो बोले अच्छा जो प्रहर कहउछ सेटा इवनिंग 6 PM हां एथिबा स्टार्टिंग कहउछ देन आर साइज केते थाए the diameter टा लिख दे the diameter of the wheels 9 inches एक मिनट 9 feet 9 feet होची तार diameter टा किंतु स्पोक रहउची 8 feet स्पोक रहउची 8 feet केना ए तमरो सर्कल टा भीतर रहछि ना साइड रे बुझ परछन आर मीनिंग कोन एटा भी तो कटि जिवो ना एटा माइनस हे जाओ बुझ परछन तो सेटा माइनस हे गेले दैट मींस तमरो जो डायमीटर टा रहउ 9 फीट पर व्हील रो किंतु स्पोक रो कहले पूरा कोठु को जेनाबो तमे
फ्रॉम हियर टू हियर ये पूराटा बुझि पड़छ नै बुझि पड़छ सो दैट वुड बी केते तमर करिबो 8 फीट्स Sir, 6 AM or 6 PM? PM Your problem. देखो ये तो साधारणतः जाग शुणिया कथा यहाँ रे रहिले बुझि पड़छ नै तो बुझि पड़छ एबे नाउ एबे तमे बुझि गेलो प्रहर कोन 8 स्पोक्स तमको डायमीटर में देखिलो ना एथरे आउ गोटे देखिबा ना दिस वन एथरे तमे देखियो जो डायमीटर अछि एथरे आउ किछि जिंस रहिछि हियर इज द डॉट्स ए देखियो एठी सब डॉट्स अछि दीस आर द डॉट्स दिस डॉट्स रिप्रेजेंट मिनट दिस डॉट रिप्रेजेंट मिनट्स ये जो व्हील ऊपर डॉट्स अछि डी प्रकार डॉट्स थाए ध्यान से मानको द व्हील इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ डॉट्स गोटे थाए बड़ डॉट गोटे थाए छोटिया डॉट बुझि पछन तो इनर पेरिफेरी इनर साइड रे बिग डॉट्स तुमको देखा जो दीज आर द आउटर साइड रे मध्ये डॉट्स अछि आउटर साइड रे सो डॉट्स जो अछि डी प्रकार एठी तमे देखिबो आउटर साइड रे अछि इनर साइड रे अछि जो आउटर साइड रे डॉट अछि दैट रिप्रेजेंट सेकंड Outer side. बिगड़ता सेकेंड्स मिनट्स में Bigger টা বড় সাইজ ভিতরে আছে। हाँ बिगर डॉट टा मिनिट्स को रिप्रेजेंट करिबो Second. स्मॉलर टा सेकंड को सर रिप्रेजेंट बिगड़ता बाहर अछि ना ভিতরে तरे रहिबो बुझि पड़छ नै देन सो दिस वन ए देखो तो दिस वन रिप्रेजेंट्स मिनट्स एंड दिस वन सेकंड ये सेकंड को रिप्रेजेंट करिबो आउटर टा डन सो ये डॉट्स रो कैलकुलेशन बुझि पड़छ तो तमे करकी डॉट्स गुडा मन को कोन रिप्रेजेंट करे तेबे तमे फोक लेखि परिबो कि स्पोक्स ऊपर बुझ पड़छ ना स्पोक्स रो डिजाइन देखि दियो द डिजाइन ऑफ द स्पोक्स लाइक द सोल डिजाइन टा केमति छै सोल बुझ पड़छ लाइक द सोल द डिजाइन ऑफ द स्पोक इज लाइक सोल फॉर एग्जांपल तमे एठी देखि परिबो इट्स ए शेप देखो द शेप टा केमति रहिछि बुझ पड़छ शेप देखछ ना इट्स लाइक ए सोल द डिजाइन each spoke पर लिखि परिबो पे बाकी ये पे देखो मतलब कने के देयर इज नो एंड टू द स्पोक्स देन आई के भीतर में बहुत अच्छी इच इमेज रो कोनी तर ना अछि जो छोट छोट इमेज देखो ना दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन ये जो छोट छोट इमेजेस होछि these are also decorative then बुझ परछन मीनिंग्स कोन एथिरे बहुत सारा डॉट्स रहछि तो यार कैलकुलेशन यदि हम केबा मतलब वन ऑफ द बेस्ट हम के बात यूज ऑफ मतलब तमे कोई पर ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स तो जो एट कोनार्क टेंपल पूरा टाइम को पूरा कैलकुलेट कराई छी तो जेतले तमे जाउ छो कोनार्क टेंपल यू हायर गोटे कहा को हायर करतो सेठी बुझ से तुमको बुझे पारि अदरवाइज न कुछ गाइड ना थे तमे बुझे पारि आउ कि तुम बुझे पारि ना बिकॉज़ दे आर एक्सपर्ट बुझ छ तमन को ट्रेनिंग दिया जाए तो ए तई जो छ तुम ट्रेनिंग देके सब कहते तो जोदा तमे तन बुझी पारिबो अदरवाइज निजे बुझी पारिबो टेंपल रो कैलकुलेशन कोन इधर बुक रे तमे ते पाइबनी कौन सी बुक रे पाइबनी सेटा केवल आपको कहते ट्रेडिशनल नॉलेज बुझ छ सेठी ही तमे पाइ पारिबो तो ये पूरा स्पोक्स रो हम देखिले Sir, से जो ভিতরে जो स्ट्रेट लाइन क्या আছে রেড में বড় বড় ডট আছে बिगड़ता सेकेंड जो बाहर हाँ, ठीक है। এটা 30 इंच এটা एक्चुअली डिफरेंस होची 90 मिनिट्स ए दीटा भीतर डिफरेंस होची 90 मिनिट्स बुझ परछन ए दीटा भीतर डिफरेंस होची 90 मिनिट्स तो दीटा जो स्पोक अछि ना ए दीटा स्पोक्स भीतर डिफरेंस होची 90 मिनिट्स आउ गोटे कैलकुलेशन बहुत अछि जेतरे सूर्य उदय होय ना आरो कैलकुलेशन 8 आवर स्टार्ट हुए 6 am देन एम इति उल्टा चलेटा बुझ परछन तो एटा उल्टा चले एठी 6 am हबो ते जेतरो सनराइज करिवो ना तो सन ए स्पोक्स रे पडिवो तापर जेते 12 तमर हबो 12 नून हबो एठी पडिवो तापर बुझ परछन ते एमिति चले तो जेतरो सन रो जो माने जो बुझ परछन तो शैडो टा को कैलकुलेट करा बुझ परछन तो कोठी पडुची जेमति सनराइज हबो ईस्ट आसला तो शैडो टा पूरा एठी पडिवो बुझ परछन तो एटा 6 am
तो धीरे धीरे सन ऊपर को जीवो सन एमती राइज करी ऊपर को जीवो पूरा 12टा बेले एठी शैडो पड़िबो एठी देखिबो शैडो पूरा 12टा बेले शैडो पड़िबो बुझ परछन तो एटा पूरा सन पूरा रिप्रेजेंट करूची पुणी इवनिंग जेतरा आसी जो भाबो पूरा इवनिंग देन हियर वुड बी एठी पूरा रहिबो तमरो हियर वुड बी इवनिंग बुझ परछन केमती रहउची कैलकुलेशन ना बुझा पड़बनी एतरे तमको केमती जानु छंती फॉर एग्जांपल एठी रहिला सन लेट्स से तमरो सन एठी रहिला तो सन जेते उदय हेबो एई जो तमरो व्हील रो जो ताको कोन कहआ जाय जाको एटा एई जो रे ना आरो शैडोटा एठी पड़िबो जेतरो सन पूरा ओवरहेड रहिबो आरो शैडोटा एठी पड़िबो ना बुझा पड़बनी ताले सेटा हैला पूरा ओवरहेड हेले 12टा देन जेतरो सन तमरो सेट हबो एठी रहबो सन सेट हबो तारे आरो शैडोटा कोठी पड़िबो एठी पड़िबो ये पर लाइट आसतो तापर बुझ पड़ला कि नहीं बे तेम जॉन 24টা বলেছে তো সূর্য তো সবବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକେସନରେ ଥିବ ତ ସେଇ ସବୁ ୱିଣ୍ଡରେ ହିଁ ଟାଇମ ଦେଖି ହବ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ଅଲଗା ଅଲଗା अच्छा तुम कहबा से गोटिए रे करू ना अलगा अलगा एटा बढ़िया क्वेश्चन एटा माइंड भी अलगा अलगा हेई पारे मोर नॉलेज रे नहीं देखिए कि गोटिए भी रे देखन सब भी रे बुझली सब की देखो ये सोचिया को तो देखिए आप कहीं गोटी साइड रे बैक सब तो बैक इटा हबोनी बैक साइड के केमती पड़ी कि बुझली पड़िबनी बैक साइड रे तो किछि व्हील्स थिबो बुझली कंटाल हेजवे बे डन ताले तमरो 24 into 7 कर दीजिए सीधा देगा 1250 तक पोजीशन मार्क कर सकते अच्छा 7 हॉर्सेस रो नाट के लिख दियो अच्छा एबे व्हील नहीं छिबो तो लिखि पारे व्हील 7 हॉर्सेस रो नाट 3 hours दीटा स्पोक ভিতরে ডিফারেন্ট হচ্ছে 90 केते 180 10 180 ले बहुत ही छिबो अच्छा 36 18 तमे कहछ तो कैलकुलेट तमे जो हिसाब करले बता कितनी घंटा बोली बुझि परछन सेटा डॉट्स थिबो देखिए ताकू नले पर देखि देबी हला किंतु ए दीटा भीतर 3 आवर्स सेटा रखि था ताकू छाड़ दी किंतु पता नहीं से काहे लिखि देले तल देखिया पड़े हला जा भी हो तो आउ किछि लिखि दियो तो एबे कोनार्क रो मीनिंग लिखि दियो कोनार्क रो मीनिंग कोना अर्थात एंगल कोना अर्थात एंगल that represent angle arc means sun arc means sun बुझ बचन so that would be konark is a black pagoda आपको मते कोन कहै छै black pagoda राउंड रिपीट करो कोना आ गोटेला आर्क कोनार्क को दी भागरे भाग करे गोटेला कोना आ गोटेला आर्क कोना रो मीनिंग होची एंगल एंड आर्क रो मीनिंग होची सन सेट में आर्क का क्षेत्र कहंती है ना और इट्स ए सन टेंपल और ब्लैक पैगोडा और आपको कौन कहै छै ब्लैक पैगोडा आपको ब्लैक पैगोडा एथबी व्हाइट पैगोडा को उठा दो पूरी एथि पे आपको ब्लैक पैगोडा कहै छै कि जेतले पोर्तुगीज माने जाउतले बे बंगाल रे ट्रेड करथले इट वाज लुकिंग लाइक ब्लैक समथिंग बुझियो छै एथि से माने आपको देखिले ब्लैक पैगोडा तो हेबेटु आपको ब्लैक पैगोडा बोली कहंती because of the black looking from the sea now आउ किछि फैक्ट्स हम लिखिबा तो सेटा एबे कलर ता तो ब्लैक ही गई है ना जो सी रु जेतला जाने समुद्र रु देखिबो केमति देखा जबो तो ब्लैक ही देखा जबो ना केमति देखा बुझिबो छी नाइट आउ कोन देखिबा द टेंपल इज कंस्ट्रक्टेड विथ which rock संपत्ति निकोलर रॉक यूज करछे हॉन्डोलाइट लाइट रे कोन यूज हेछि हॉन्डोलाइट एंड सैंडस्टोन दीटा यूज हेछि बट मैक्सिमम हॉन्डोलाइट यूज हेछि राइट the stones brought from other countries and from the within countries as well
the stones were brought from other country and from within as well. Shape to likhi paru, shape of the temple chariot. Shape of the temple is chariot. UNESCO, it was given UNESCO Heritage Tag in 1984, or got UNESCO Heritage status. Got UNESCO Heritage status in 1984. 84. 81 ରେ ଚିଲିକା ହେଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ it was hanging that means अच्छा ଏଥିରେ ମୁଁ କହିଦିଏ ଏଥିରେ magnet ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ Yes, sir. ବୁଝିପାରିଲ so magnets were arranged in such a way that there was a floating god ଟା float କରୁଥିଲା କାରଣ magnet ର ଦିଟା pole repel କରିବନି କି तो so that bottom ଆଉ top ରେ ତାକୁ arrange କରାଯାଇଥିଲା magnet କୁ so that এটা floating କରୁଥିଲା जो sun god ଟା floating କରୁଥିଲା magnet ବୁଝିପାରିଲ ଏମିତି arrange ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ magnet କୁ ନେଇଛନ୍ତି ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ अच्छी लग रही है। the sun god was balanced in such a way the sun god was balanced in such a way it was looking floating in air it was looking floating in air by the magnet effect floating in air by the effect of arrangement of magnet by the effect of arrangement of magnet जो magnet गुड़ा थिला तब arrange करके एमती रखिथिले तळे और ऊपर so that से float करूथिला बुझे सेटा रिपीट करबो से बाकी तो 1200 क्राफ्टी वर्कर्स कह देछि विश्व महाराणा जानिछो the sun god was flanked by two goddesses the sun god was flanked by two goddesses the sun god was flanked by two goddesses कारण साधारणतः डेटी तो रहबे ना सब्सिडियरी डेटीज रहबे सब मंदिर थांती सब्सिडियरी डेटीज ना बुझबम that is the pratyusha and usha then next time देखिबा the seven horses name of seven horses of Konark temple the name of seven horses of Konark temple they are Gayatri Birhati Brihati Gayatri Brihati Birhatri then Usni Ushnih then Tristubha Tristubha अच्छा उसने तो लिखला USHNIH then Tristubha TRISSTUBHA Tristubha TRISSTUBHA Tristubha then
Pankit, 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 And KIT, okay. Anustuha, ANUSH, TUBH, T, है ना, TUBH है। जनाब की रहा तो क्या ना, कितना है? Prosody, PROSODY, PROSODY. These are the 7 horses, है ना? ये रहे तुम्हारे 7 horses वाला DY, Prosody, DY. So these are the DY. So that means each ला तुम्हारे 7 horses, 8 wheels को हमें देखी देले, बाकी ये पे ऐसे हमें structure, है ना? तो factual status हमें देखी देले. Now you can have loop. means जो horses आगे ଅଛି ନା side ରେ ତମେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆଗରେ ଆଉ ପଛରେ ବୁଝିପାରୁଛ horses ସାଧାରଣତଃ wheel ଟା ପଛରେ ରହିବ horses ଆଗରେ front side ରେ ତମେ ଦେଖିବ horses ଅଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଆଗ ସାଇଡ ଟା ଯୋଉଠି ତମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ lion ଗୋଟେ ଅଛି elephant ଯୋଉଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଲା frontal side ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏବେ ଦେଖିଦିଅ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ ଅଲରେଡି ଆମେ ସବୁ ପଢି ଦେଇଛେ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ସ୍ଲାଇଡ ଦେଖେଇବି ବୁଝିପାରୁଛ ଏବେ ସ୍ଲାଇଡ ଦେଖିଦିଅ Now this temple, Konark temple, was built in 1250, 1255 in Chennai. During the reign of Eastern Ganga king, that is Narasimha Deva I, which was starting here, which was into Langura, Narasimha Deva I. And now it's Langura, Narasimha Deva I. The giant ornamented chariot dedicated to the sun. Already I'm going to say architecture. That means Konark, the Konark means angle. And arc Helastan built in the royal status and the prestige to the that is commemorate his victory over the Muslims. So it had given one his victory over the Muslims. The temple called Black Pagoda, the European sailors, those who were sailing through the Bay of Bengal trappings, it was looking black to them. Black Pagoda. जो 1670s रे किए थे the Europeans which was Portuguese से मैंने सोए थोड़ी जाओ थे because of the what appeared black so it means you tower में देखा होते तो तोड़ते हो इतने फ्लोरा मतलब ना था ना गच्छ पत्थर ना था पर समुद्र कूलर था पर giant देखा जो इसमें देखा जो इधर पूरा giant देखा जो तो सच में आपको black powder कहते हैं so 1676 because of the giant looking तो देखी परिको The temple was existed today and partially restored by the conservation effort of the British Indian era archaeological teams declared UNESCO heritage in 1984. Already we discussed about it. So that means a temple. अच्छा जब तुमको climatic condition देखियो कि why this temple is जब ये देखो ये temple दे देखियो ये बाकी temples too कहना जो बाकी temple माने चलिए सर खजुराहो temple तो These temples are in good condition despite being older than this one. बुझिपारछ कारण एटी weathering effect अछि को बुझिपारछ weathering effect in the climatic condition salty as बुझिपारछ तो climatic condition humidity रहउछ वर्ष सारा तो humidity रहले weathering ता जल्दी हिजबो सेथि टेम्पल weathering हबार कारण बुझिपारछ तो ये weathering हबो because of its locational factor तो ये wheel को तमे डिस्कस करले तो wheel को पूरा तुमको कहि देली है ना स्पोक्स देन कोना एंड आर्क रो मीनिंग तो कहि दै छी ऐसा कलिंग द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑलरेडी कहि दै छी तुमको कुछ बुझिन एंड से पीढ़ा स्टाइल द स्टनिंग डिजाइन ऑफ द कोलोजर चैरियट विथ 24 wheels that is the down towards that means drawn towards the down by 7 galloping horses which gives the impressive carrying the sun gods across the heaven बुझियो the 7 horses which pulls the temple eastward represent the day of the weeks. ये जो 7 ना they represent the days 7 horses the 7 horses they represent days 7 days 8 are 24 weeks that are 7 days 7 horses they represent the days of the week or simple days लिख दो 7 horses for each the 7 days table को अपन 24 1 है
अरे गोटे व्हील कैलकुलेशन करबे 24 व्हील कैलकुलेशन करबे सेटा गोटे दिनर कैलकुलेशन 24 टा हला कोन 24 मंथ अच्छा जो सुना जो केते 12 मंथ तो जदि 24 व्हील्स को हमें पेयर करले 12 मंथ ही गिला इतने 12 पेयर बुझ बर्तन सेटा हला जो 12 मास सेटा 12 पेयर इक्वल टू 12 मंथ्स आइला 7 हॉर्सेस हला तमरो 7 डेज तो बुझ बर्तन नहीं बे ताको से ड्राइव करू रहिला तमरो सन डाइव कोन से गोटी व्हील को नबे आके टाइम कोन सब चल मन गोटी व्हील के तमे न बुझ बर्तन तो हमें कैलकुलेशन पूरा गोटी व्हील के करबा ना तो 8 स्पोक्स अछि तार दुटी पीछे हम पढ़ते बुझ बर्तन नाउ कोन कोचो को बुझ बर्तन तो आपको मध्य हमें देखि देल सो रिप्रेजेंट्स द डेज ये देखि दियो तुम दिस वन एंट्रेंस द टेंपल रो एंट्रेंस जेमि तुम एंट्री करिवो टेंपल रो एंट्रेंस रछि तुम देखो दैट इज अ गजसिंह आपको मैं कोन कहै छै गजसिंह बुझियो सम तो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द टेंपल जोटी तुम देखि परबो एक कॉलोजल गजसिंह इज देयर बहुत बड़ गजसिंह अछि बुझियो सम तो गजसिंह अर्थात गज आउ सिंह तेथिमे गजसिंह बुझियो सम हाथी एंड lion. So it's about elephant and lion. That's why it's called Gajasimha. Together there. अब आ तले कौन होची गोटे हिमा बुझ बरछन तो आपको तुम देखि द मेन एंट्रेंस ऑफ द टेंपल इज ईस्टर्न गेट कना ईस्ट को जाउछ साधारणतः सब टेंपल ईस्ट को थाए किंतु हम गोटे टेंपल पढी छे जार वेस्ट को छे गेट कोन लिंगराज तो ईस्ट को छे ना तेसु द टेंपल गेट को वेस्ट बुझ बरछन the main entrance of the temple eastern gate eastward को जाउछ बुझ बरछ ना वेस्ट टू ईस्ट को जाउछ कारण आमी भी जानि छी जो हमर कोन क्लॉक का कोड वेस्ट टू ईस्ट को बुझ बरछ ना जो अर्थ ता कोन वेस्ट टू ईस्ट को जाउछ तो सेम सर ये भी वेस्ट टू ईस्ट को जाउछ बुझ बरछ कारण तुम देखि पर जे हमें कैलकुलेट करले जो आवर ता प्रथम कोठी पड़ला वेस्ट रे धीरे धीरे ईस्ट को आसुची कैलकुलेशन बुझ बरछ जो शैडो ता तो से शैडोटा को आगे जो लोक माने बिल्डर काम करन देखि छ ना से तांको पाखरे घंटा न थाए किछि न थाए से ठीक टाइम रे बिल्डर पळे से खाया पी खराब मुंडो पर सुचे वाला दीप तो से निज छाई को देखन छी जेतरे देखियो छाईटा पूरा पाद तळे स्ट्रेट देखा जावनी तो जानबे खाइबा टाइम हे गय बुझि बरसन कारण हेते ओवरहेड छी पूरा वर्टिकल सथि पई से बेले पळे आसी बुझि बरसन एबे बुझि बरछ तो से शैडो को कैलकुलेशन करा जाय एठी भी सेमति तमरो शैडो को कैलकुलेशन करा जाय बुझ बरतन तो ताको भते किछि न थाए ना से घंटा ना से किछि काम कर ठीक टाइम रे सेही टाइम ही खाइ से आसे बुझ बरतन आ सेटा गोटे कोन एबे भाव तुमको 7-3 दिन वर्षा हला मेघ सूर्य नसला कोन हबो एमति क्वेश्चन भी ही पारे लेट्स से 7 डेज वर्षा आगे किसना वर्षा होनी एते आगे कोन थला वर्षा हबो 6 दिन 7 दिन कंटीन्यूअसली वर्षा हबो तो से केमती देखुथि से तरो केमती जाउथले बिलर काम करला बळे केमती जाउथले वाटर तुम देखि जो कोन से तम घर लोक बिल को काम करला बळे वाटर वाज देखि जाय have you ever seen a person having carrying that person was carrying the water was or like a sundial to identify the times so that it's the launch not right and not biological time it's a word biological time बुझ बरछन अभ्यास ही सेटा धीरे धीरे दैट विल टर्न्स टू बी ए बायोलॉजिकल टाइम ओके तो जेंति तमे दिल्ली तमे सकाळ 6 टा उठ ठीक हो किछि दिन पर तम वाच दरकार पड़े अब क्लॉक दरकार हमने ऑटोमेटिकली बॉडी रेस्पॉन्ड करियो स्टार्ट करते दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल टाइम बायोलॉजिकल क्लॉक तो से आपने आप रेस्पॉन्ड करियो स्टार्ट करते बुझ बरछन तो तांको जाना तो भूख लागिबो सेही टाइम रे ही भूख लागिबो से ओके से बुझ बरछन तो दैट इज व्हाई और इबे जानते रिसेंटली भी जस्ट 2-3 इयर्स अगो बायोलॉजिकल टाइम पाइन जन को नोबेल भी तना से ओके नहीं से बायोलॉजिकल क्लॉक को इन्वेंट कर जस्ट 2-3 इयर्स दैट सेथिबे ताको नोबेल मध्ये लिखिछ बुझ गठन तेटा तुम देखि देबो ना द मेन एंट्रेंस ईस्टर्न गेट अछि तो तुम देखि पारो द लाइन किल द टू एटा कोन लिखे छै ईस्टर्न गेट्स where the statues of the two line the two line अछि कि एपर साइड रे देखिबो एपर साइड
दीपट एंट्रेंस ला एफोर्ड अच्छा हाँ हाँ सॉरी ମୁଁ ଏଇଠି ତ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଦି ପଟେ ସାଇଡ ହଁ ଠିକ କହୁଛ ଦାଦା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରିବ ଦି ପଟ ସାଇଡ ଦିଟା ଇମେଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଇଛି ଦି ପଟ ସାଇଡ that means हमको lines killings of war elephant are installed for the vaccine ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କୁ ମାରୁଛି ଆଉ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଚଳେଇଛି କି ମଣିଷ ତିନିଟା that signifies କି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଇଡ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ money and pride ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତା ତଳେ ହଁ ନା beneath the elephant is a man. Here, the statue of the lion symbolizes the pride, and the elephant symbolizes the money, the wealth. Which further displays that these two errors, can destroy a human being completely. Garba and Hana. तो ये symbolize करे. Now हमें देखिए temple रो main structure. ये भी temple रो main structure हुआ. बुझिपाରୁଛନ୍ତି टेम्पल ର मेन बाकी आउ जहाँ से डॉट फॉट रहला आउ ଟିକେ ମୁଁ रिसर्च करिके तुमको बुझिपाରୁଛନ୍ତି so then हम देखिबा the main characteristics of the Kalinga style of temple architecture primarily साधारणतः देवड़ or the sanctums housing of the deity covered by a शिखर तो हमें पढ़िଥିଲେ already हमें पढ़िছে the sanctums or जोठी हम कोई होची main deity sanctums ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ କଣ गर्भगृह ଗୋଟେ ମେନ୍ ଭଗବାନ ଯାହା ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି these are what sanctums they are the गर्भगृह the innermost house of the temple architecture तो ताको में गर्भगृह कहूचे बा sanctums ता ऊपर होची tallest feature of the temple रो tallest feature जाको में कहूचे विमान बुझे ओडिसा रे कोन कहूचे देउल कहथली देउल ऊपर बसछि पारा बुझि बसि गीतटा सुनितो ना सुनिना हाँ तो बॉलीवुड भी पसंद बुझियो व्हाट आर दैट रियल टाइम बॉलीवुड बुझियो तो ये बॉलीवुड चलची तो ये तो पुष्पा पुनी आछि पुष्पा इज बैक आगे नहीं जाबियो ऐसे शिखर पीढ़ास नाम तो पिरामिडिकल सेट द टेंपल लुकिंग लाइक स्टेयर देखा जाको पारे पिरामिडिकल सेट बुझियो सेट पे आपको कोन कहै छै पीढ़ा स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर टेंपल आर्किटेक्चर बुझियो एबे टेंपल गले ध्यान से एमती साइंटिफिकली देखि के कोटा पीढ़ा तार कोटा विमान कोटे व्हील अछि केतेरा व्हील अछि ताको देखिबो केते डॉट्स अछि कोनी खाता पेन नेगी दिबो बुझियो ताको लिखि ले हैला बुझियो नहले गोटे ग्रुप होई पढाइबो हायर करतो जनको बुझियो यो गाइड थिले हम बुझे देबे सब टेंपल रो किछि ना किछि तमसे यूनिक मिली बुक्स रे नहीं एटा ट्रेडिशनल नॉलेज बा बुझियो एटा बुक्स रे मिली the both structures are में देखबा लिखै छै तमर squares initially and use the common platform put ही platform that is the raised platform ए देखो तमर raised platform में तो हिच the exterior that means हमें देखबा variegated into a projection known as the style of rock or the parts simple the temple is what that means हमें देखबा in the structure of the rock style ध्यान से मत ये जो तमरा मेन टेंपल टा जोटा भांगी जाईची the vimana which is dilapidated that was which style rekha style सेटा rekha style confuse होबनी but ये जो तमरा जगह मोर देखुछ this one is pidha style सेथि पे हमकु लागु छै कोनार्क से pidha style but कोनार्क जो मेन टेंपल थला that was rekha style ऐसा ही पचरे पड़ बुझबन केमती जानले से तो ये जो मेन स्ट्रक्चर जोटा तुम पछपटे देखि जो भांगी जाईची इट वाज केमती थला लाइक लिंगराज भलिया केमती तमरो सीधा पूरा स्ट्रेट जेंत पुरी जगन्नाथ स्ट्रेट सेटा सेमती थला एटा तार विमान सेतमे तुमको लागुची एटा मेन मंदिरटा भांगी जाईची जोटा रेखा स्टाइल थला एटा होची पीढ़ा स्टाइल एबे बुझि पड़छ तो है ना किंतु एठी बहुत जण कंफ्यूज होंती बट मु तो क्लियर कर देले माने जब मोन टाइप का बड़ तो मुंडटा केते बड़ बस ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି as the time passes ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେ ବଡ଼ ଟେମ୍ପଲ ସେତେ ବଡ଼ ରାଜା ଆଉ ସେତେ wealth ଏତେ ବଡ଼ ଟେମ୍ପଲ ଯେ କରିଛି 12 ବର୍ଷ ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି 1200 କ୍ରାଫ୍ଟି ପୁଣି ଆକୁ ତାକୁ ଆଣିଲେ ତ କରିପାରିବେ
तो भाव केते पेमेंट देइथिबो केते कुआड पुनी बाहरु आसीची स्टोन इंडोनेशिया वगैरह साडू भी आसीची तो भाव ताले केते टका खर्च करते बुझि परछ 12 इयर्स ने बुझि परछ तो दैट शोज दैट मींस द किंग वाज आल्सो वेल्दी बुझि परछ तो एइथुरु जणा पडुची से वेल्दी थिले और तांको टाइम रे जो डिजाइनर थिले जो क्राफ्टमैन थिले दे वर वर्ल्ड क्लास देयर किसी डाउट ही नहीं क्रिएटिविटी थिला बुझि परछ और से क्रिएटिविटी केतळे आसी जेतळे फ्रीडम थाए फ्रीडम मतलब क्रिएटिविटी केमती सो दैट मींस हम कहबा जो गवर्नेंस सिस्टम ता बेटर थिला सो बाय लुकिंग टू द टेंपल we can judge the socio-economic condition of that period of time. सोशल ମାନେ କେମିତି सोशल सामाजिक सामाजिक एंड अर्थनैतिक व्यवस्था बुझि परछ कोन so it was prosperous and vibrant society so economically it was prosperous and society was vibrant बुझि परछ so ये that means that shows from the temple ही जणा पडुछ न जणा पडु नाले एते वेल्थ न तो के परिबन प्लस पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज वाज देयर नाले 12 वर्ष आउ जण की आसी भांगी दै था बुझि परछ पुनी एठी तमे देखुछ कि दिस वाज द सिंबल ऑफ द विक्ट्री ऑफ द मुस्लिम कना ता पूर्वरु कला पहाड़ कोठी गेसल पुरी को बुझि परछ तो ये जो कला पहाड़ कहले बेंगल रे मुस्लिम रूलिंग थिला ओडिसा रे होची हिंदू बेंगल रे मुस्लिम तो साथी सोले बेंगल रो रूलर माने ओडिसा को अटैक करते अब ये माने सोले प्रोटेक्ट करते तो देयर वाज यूज्ड टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट वर्तमान भाई बहन ही देछ तो इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इट्स नाउ ब्रदर एंड सिस्टर वजह से कौन ସେତେବେଳେ କଣ ଇନକମ୍ ହଉଥିଲା କାଇଁ କରୁଥିଲେ ବଢିଆ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ କଣ ହଉଥିଲା ବେକାର ୱେଷ୍ଟେଜ ଅଫ ତମେ କହିବା କଥା it is a huge colossal temple which built more than thousands of labor millions of dollars were spent that was wastage ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା କି ସାର୍ ଏବେ ସିନା ଇନକମ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତମେ କହିବା କଥା ଏବେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପଲ ହଉଛି ଇନକମ୍ ପାଇଁ ଏୟା କହୁଛ that means your sentence is कि sir presently the temples are built they are for the income purpose एउटा प्राइड र सिम्बल कि देखो मनीष जेतेବେଳେ मनीषକୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ତିନିଟା ମିଳିଗଲା ପରେ ସେ ତାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ ସେ ଖୁସି କଣ କରିବ ସେ ये सब तो थिला कौन करिवो गोटे प्राइड सिंबल ऑफ प्राइड बुझिबो ते से देखले मु थिली बोली लोक जानिबो किमिति एमती गोटे राजा थिला बोली जानिबो किमिति से किछि एमिति कोन सेति पई पीपल विल फॉरगेट यू बट योर डीड वुड बी देयर जे तुम जो काम करि जीव ना सेटा रहइबो सब लोक पई बुझिबो ना तनो ये थिला एथे पई सेते बेले वेल्दी बा हमको जो मटेरियलिस्टिक लाइफ नथिला बुझिबो जहाँ भी मनी आसुला सेटा गोटे सिंबल ऑफ प्राइड बुझिपारछ सेति खर्च करथिले बाकी किसी इनकम सोर्स नथिला गोटे लाइक पैशन इट वाज लाइक बुझिबो इट वाज लाइक ए पैशन जेमती जणे जणे देखिबो तार तार सुपर बाइक रखिबार कोन से के तम भीतर के तो बॉयज माइट हैव एनी ड्रीम कि आफ्टर क्वालिफाइंग लाइक ओसीएस और सीएससी बस मतलब यूपीएससी वी विल हैव ए सुपर बाइक के को सुपर कार गोटे किनबा the dream of anybody is having भूल जाओ बुझो so better to stop restriction तापर तम vigilance पहुंची जो करे बुझो restriction की चेंज तो किए परिबो next day there would be vigilance बुझो तो साथी के ऑफिस को आसीबे आ ओते कथा और बुझो के गाड़ी टे धर के आसीबे बुझो तो यदि तुम भावुच जे मूवी फूवी देखी कि बेसी इंस्पायर हेउचो कि आई विल हैव सिविल सर्वेंट्स आर लाइक दिस एवरीवन इट्स नॉट वन दिया everybody is fortune to become he is fortune ना कौन है सुना पड़ा सो जो आपके कारण से नहीं he is fortune तो समस्ते नवीन बाबू नो कि समस्ते is not enough to have a funding बुझियो नहीं so
ड्रीम टा गोटे के छोट रखिबा ओनली योर ड्रीम इज दैट टू सर्व द पीपल बुझ पड़िले तमे ड्रीम कोन टू सर्व द पीपल सुपर बाइक में सुपर कार में এটা আউট অফ সিলেবাস হ্যাঁ ରଥ ପାଗସ ରଥ ଯିବା କହିଥିଲି ତମକୁ ଯୋଉ ଲାଇନ ଲାଇନ ହେଇଥାଏ ଯେମିତି ତମର ଏଠି ମୁଁ ଡ୍ର କରି ଦେଖଉଛି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନ ରେ ଅଛ ବୁଝା ପଡୁଛି ତମକୁ ଏବେ ଦେଖ ଟେମ୍ପଲଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଟେମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ହଁ କି ନାହିଁ ଆପରେ ତମର ଗୋଟେ କ୍ରାଉନ ରହିବ it would be like this crown ରହିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ then there would be ଖପୁରୀ ରହିବ ତାପରେ କଳସ ତ ଟେମ୍ପଲ looks like this ହଁ କି ନାହିଁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ ହଁ କି ନାହିଁ this is called rekha style आपको କୁହାଯାଏ rekha style but this one is not like that ये टेम्पल केमती ए भले टेम्पल कोन लिंगराज এটা কোন रहबो এই যে স্টাইল যেটা আমি ড্র করছি এই স্টাইল লিঙ্গরাজ এমতি দেখা যায় পুরি এমতি দেখা যায় তো দে আর কল্ড রেখা স্টাইল স্টার্টিং লেকচার দেখি দেবো हैला so that is why next আমি দেখবা the architecture हां सब কেনা আসবা তো এবি বুঝি পাইলো that means the main temples of the Vimana which is dilapidated got damaged that was having the rekha style বুঝি পারছেন বর্তমান যেটা দেখছো তুমি pida style done and the pyramidical shape so it's having pyramidical shape ये केमती रही pyramidical shape done then as well sandstone already लिखा है देखो the roof of the made of sandstone that rises 30 meters height है ना 30 meters height होची the culture that is but iconographics that depicts the day to day activities of the contemporary lives मैं तुमको already कही देछि कि temples that signifies that times that period socio-economic life कोन थेला तेठी already लिखा है देखो that depicts the day to day activities of contemporary life same time रो तो टेम्पल रे जो अछि जेमति कि टेम्पल रे बहुत सारा तमे देखो एरोटिक इमेजेस आल्सो देयर डांसिंग इमेजेस आल्सो देयर कनाक रे तो दैट शोज के दैट मींस हमें कहबा से टाइम रे मतलब क्लासिकल डांस तो कोना तो ओडिसी डांस दैट वाज डेवलप्ड हे जेतिला सेति में जो मंडप नाही लाइक दिस वन हियर यू कैन सी दिस हॉल ये देख पाछो दिस वन इज ओपन मंडप ये जो देखो ना दिस वन इज ओपन प्लेटफॉर्म वेयर ओडिसी डांस इज परफॉर्म बुझिबछ ओडिसी डांस परफॉर्म कराते सेट पे कोज ना कोनार्क डांस फेस्टिवल तो कोनार्क डांस फेस्टिवल कोन पाइबे ओडिसी डांस में एठी परफॉर्म कराचे इट वाज ये जो प्लेटफॉर्म हेतला एठी डांस करिया पे करा देतला ए प्लेटफॉर्म बुझिबछ तो जेतरो राजा करथले इट वाज डांस में करा देतला दैट मींस बाय कोनार्क टेंपल जेतरो तमरो 13th century mid of the 13th century so ओडिसी डांस वाज कंप्लीटली इवॉल्वड बुझिबछ तो डांस इवॉल्व ही जेतला जो देवदासीज दे यूज्ड टू डांस हियर टू प्लीज द डेटीज से जो अपन देखितले फास्ट जो दिता गॉड नरसिंह ना कोन सेटा से दीटा जाको से बुझिबछ नहीं तो ये देखो तमरो लिखा छै ना नृत्य मंडप एठी लिखा भी छै नृत्य मंडप द डांस बुझिबछ एठी मंडप ओपन मंडप आ जो कोनार्क डांस फेस्टिवल तो ओपन मंडप लिखा है बाकी गुडा क्लोज एंड रविंद्र मंडप को क्लोज मंडप डांस बुझिबछ नहीं ये ओपन डांस था एटा तो ए जेमती सेमती अछि एटा डैमेज नो यार स्ट्रक्चर डैमेज तमे देखि परबो एठी तुमर केमती डांसिंग सब रहै छै बुझि परछनी सो दीज आर द व्हाट एठी तमे देखो स्टाइल्स सो दीज आर द स्टाइल्स तमे देखि परबो के डांस रो नाउ फास्ट तो आपको मैं देखितले नाउ कम्स टू हियर द टेंपल बेस इज कवर्ड with the sculpture consists of deities like Lord Vishnu, Lord Shiva, Goddess Shaktis and intricately carved the scenes of the life at the core पहले राजांकर जो दरबार रे जो सब जा होतला ताकू सेटा टेंपल रे प्रेजेंट कराई छै बुझियो जहां सेति नै गोटी सेंटेंस रे मुखे ये सोशियो इकोनॉमिक टाइम पीरियड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन व्हिच वाज प्रिवेल्ड बुझियो दैट पीरियड दैट वाज रेप्लिकेटेड और दैट वाज शोन इन द टेंपल जहां सब हेतल ताकू देखा देते सही बुझियो ये कोर्ट रे जा होतला राजांकर दरबार रे दैट इज सोन लॉर्ड शिवा कथा नहीं जा लॉर्ड विष्णु कथा नहीं जा गॉडेसेस शक्तिस दे आर हैविंग आल्सो रिप्रेजेंटेशन इन द टेंपल और दे गॉड प्लेस देयर आर सम हमें देखिबा
mythical creatures also known as the walls ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି creatures ମଧ୍ୟ ରହିଛି figures ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଥିରେ ତମେ elephants ଦେଖିପାରିବ giraffes ଦେଖିପାରିବ snakes ରହିଛି birds ରହିଛି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ place ପାଇଛନ୍ତି temples ରେ that means temple କୁ ଆମେ କଣ କହିବା inclusivity of the temple is ଆମେ କହିବା or inclusiveness the temple was inclusive it was more inclusive କହିଲେ only human କୁ ଆମେ place ଦିଆଯାଇନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି that means inclusive ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ include କରା ଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ that is why temple is inclusive temple then another uniqueness ତମେ ଦେଖିପାରିବ is a massive iron beams ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି that are placed in between the every two storied iron beams use କରାଯାଇଛି जो storage ସବୁ ରହିଛି ତା ପାଇଁ iron beams use କରାଯାଇଛି these beams are used to construct the higher floors of the temples the temples जो higher floor ଗୁଡା ରହିଛି ତାକୁ support ଦେବା ପାଇଁ iron beams ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି support ଦେବା ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ other exclusive ତମେ ଦେଖିବା that is the peak of the main temple was created using 52 ton of the magnet ये ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି जो मेन टेम्पल थिला तापर 52 टन्स रो गोटे मैग्नेट थिला मु तुम कहितली इट वाज अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द इमेज ऑफ द सन वाज फ्लोटिंग कना सन ता कोन फ्लोट करूची ना सेतमे ताको मध्ये से माने भाबो पूरा सन रो कांसेप्ट जेंति सन फ्लोट करूची सेमति सन गॉड वाज आल्सो फ्लोटिंग बाय पुटिंग सम मैग्नेट और अरेंजमेंट ऑफ द मैग्नेट 52 tons of the magnet the arrangement of the main magnet and the other magnets are unique way resulted the main idol of the temple floating air already कहिछि मु तुम बुझिबो तो कारण दीटा मैग्नेट को आनिबो तार देखबो अपोजिट साइड कोन करिवो से रिपेल ओ सॉरी ऑपोजिट अट्रैक्ट सेम से रिपेल करिवो बस ए भी मैग्नेट को सही अनुसार से अरेंज करले सो दैट रिपेल करिवो मझीटा फ्लोट करिवो मझीरे जो ऑब्जेक्ट रहबो से फ्लोट करिवो सेति पई तो 52 टन्स रो दियाला नले ताको से अपलिफ्ट करि परिबोनी फ्लोट करि बुझिबो सो दैट इज व्हाई इट वाज फ्लोटिंग इमेज एबे बुझ पाले ना मैग्नेट रो यूज काहे के हितला बुझिबो next the temple great architectural brilliance and a splendid blend of the architecture art history Konark deyachi bimana the main temple intended for the housing of the deity jagamana already tamane janicho apo puni kahi repeat karibi bimana hochi main temple jagamana hochi tamar kon rahibo that was for the offering hall kana ame seti prayer thai prayer kwa jay जगमोहन कोन कहै प्रेयरिंग हॉल बुझि परछन एठी कराइतला त नृत्य मंडप ऑलरेडी अछि त डांस मंडप देखि देले सर वो मंदिर रे भी तुसे लिखा है कि सेडी वर्शिप करा से भगवान के बाद सेडी तो ऑफर कर ଯିବ ସବୁ टेम्पल रे न थाय ना फॉर एग्जांपल पुरी रे भोग मंडप अछि नाटा मंदिर अछि जगमोहन अछि किंतु एठी नाही जोठी नाही बोथ वे यूज करिवे एठी खाली तमर कोन दैट इज ओनली जगमोहन तो सेठी ऑफर भी करबो प्रेयर भी करबो बुझि परछन मतलब प्रेयर अर्थात दर्शन करबो जोटा तो भोगटा सेठी लगा हबन जेमति तमे जो पुरी जाउ छ इबे बाकी टेम्पल गुडा ब्लॉक अछि ना प्रथम जो दीटा छोट छोट टेम्पल ब्लॉक नहीं की तमे खाली जे जगमोहन रे पसु छ एंट्री कर सेपट पे बाहर गला किंतु पूरा टेम्पल रो स्टार्टिंग रे एमति एंट्री करके जाउ छ जाउ ना तो पूरा ब्लॉक हेछि सेते बेले थिला भोगटा एठी लागुतला रोसई घर पाखर सेते में भोग मंडप प्रथम 22 5 जोटी सरीला छोटिया जो गेटटा बंद अछि सेटला भोग मंडप एटा ब्लॉक अछि तो से रोसई घर सेपटे रोसई शाला रहिला एटो आसला एठी भोग लागिबो तापर भोग सेठी जिको कोठी की तमर जो भोग जोठी दिया बे कोन कहजे आनंद बजार सेठी की जीवो बुझि परछ सेठी पे सेटा फ्रंट करिवो तापर हेबो डांसिंग हॉल तापर रहबो प्रेयर हॉल बुझि परछ एटा सेठी पे ताको डिजाइन करैतला सो दैट स्मूथ पैसेज किंतु सेटा सब टेंपल रे नाही जोठी नाही डुअल यूज यूज करिवो बुझि परछ तो दैट मींस ए पंचरथ स्टाइल बाकी त जानि परबो दिस वन इज ए पंचरथ स्टाइल पहले 5 सेगमेंट्स आर देयर पंचरथ स्टाइल ये तुम्हारा आउट छी नहीं एते आउ खास नहीं कॉल्ड रेखा जो वर्टिकल लाइंस को कौन कहते हैं रेखा ऑलरेडी मैं कह दी थी वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड एज द रेखा पंचरथ स्टाइल पिरामिडिकल शेप रही छी ऑलरेडी पिरामिडिकल शेप तुम देखि परिबो है ना द पिरामिडिकल शेप्स 4 डोरवेज रही छी बस खत्म पिरामिडिकल शेप तो बुझी परिबो पिरामिडिकल शेप बाकी एठी तुम लिखाई छी ए तो सब फिगर जमते लिखाई छी फॉर एग्जांपल इट्स लाइक द व्हाट स्ट्रीम्स ऑफ
carnies, they are separated by the 3 tiers of means high recesses roichi, which contains a number of beautiful life size standing figures of the women in various dancing poses playing different musical instruments like the drum, flutes, veena. बुझियो ये सब दरकार नहीं, ये तो बहुत ଇଏ ଅଛି, ଖାଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଯୋଉଟା ଅଛି ନାଟ ମନ୍ଦିର ଦେଖ ୟାର ନୃତ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଯୋଉଟା ବା ଯାହାକୁ ଡାନ୍ସିଂ ହଲ୍ କହୁଛେ, ଜଗନ୍ନାଥରେ ସେଟା ଏନକ୍ଲୋଜ୍ଡ ୱାନ୍ ବା କ୍ଲୋଜ୍ଡ ୱାନ୍, ତମର ଲିଙ୍ଗରାଜରେ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ୱାନ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଓପେନ୍ ୱାନ୍। ହଁ ନାଟ ମନ୍ଦିର ବା ସେଇଟା, এটা সেপারেট ଅଛି, ବୁଝିବ, এটা ওপেন এন্ড সেপারেট। ମନ୍ଦିର କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବ। ବାକି है ना, এটা কোনার্ক থরথরে কোথরে 7 ওয়ান্ডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রে আছে, কোনার্ক 7 ওয়ান্ডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এটা ବି তুমি মনে রাখিও, বুঝিব না। being the 7 wonders of the world ରେ ଆସୁଛି, from the point of elegance, balance, beauty, this temple, the only temple in the eastern India which got the distinction to be one of the 7 wonders of the world। ଏଥିପାଇଁ ତମେ ଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା କଥା, ଆଉ ଯାଇକି ଖାଲି ସେଲ୍ଫି ନେଇକି ଆସିବନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଫଟୋ ନେଇକି ଆସିବନି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆସିବ। ସେଲ୍ଫି ତ ନୁହେଁ, ଏବେ ରିଲ୍। On the point of culture and say this. ସେଇଟା ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ସେ ଏମିତି କରିକି ଫୋନ୍ କୁ ବି ଯାହା ବି ହଉ, तो एथिक है ना तुम्हारा कोनार्क मोर देन है ना, मुझे मैंने बिना टेंशन को लिखेगा मोर देन है दिस, हां हो नहीं नाउ करियो जीवन ऑनलाइन रे अच्छो कुछ पड़ला तुमको नमस्ते। Yes, sir. तो अच्छा, जो मैंने ना फास्ट क्लास थो जार ऑनलाइन रे किबा ऑफलाइन रे जो मन को फास्ट क्लास थो, तो टिके तुमन को टॉलरेट करिया पड़िबो, जोटा आगुरु हे जाईची सेटे टिके न जानले तुमको टिके कोन लागिबो कहलो, एते लाइक फ्लोटा लागिबोनी, लाइक उटे किसी बात तो पता ना कि पूरा एवरीथिंग वाज ओवर द हेड, तो गोटे गोटे लगे कि हाँ रेखा पिता जेटा सेटा इनिशियल क्लासेस रे पढ़ी दिछि, दैट इज मैटर, यू कैन आल्सो गो थ्रू दैट मींस सो दैट टू बैलेंस हिजो यू may have the clarity of the features, बुझियो। Done everyone? So with this I will end the morning class. Thank you everyone, have a good day.